I'm Vikrant Bhosale. I teach ethics and AC in some part of CSAT in Unique Academy. The purpose of today's session is to introduce you GS4 paper, its overview, and to help you to understand what are the essential requirements that you should meet in order to score better marks in GS4. All right. So let's start. One thing about this paper is not formally taught in schools and colleges, right? It is not part of a regular curriculum. So unless you study some part of political science or philosophy as such, you don't know ethics as a discipline. Even though as a adult, grown up, we deal with right and wrong. But we don't deal with right and wrong as a science, as a subject, right? We deal it with a commonsensical experience. Is it not? And because we deal with ethics at our personal level, it creates sort of some distorted view about what is ethics. उसकी वजह से बहुत सारे misconceptions, myths create हो जाते हैं. These myths are further enhanced and exacerbated by toppers. When we listen to toppers, we are curious to know how they prepared this subject, right? But if you listen to some of the toppers, you would find their opinions are on opposite spectrum. Exactly, North Pole, South Pole. So some toppers say, okay, this is a commonsensical paper. You have to write out of your, a fair judgment of right and wrong. And you don't have to prepare much for this subject. On the other hand, some toppers say that they used to wake up early in the morning, 4 a.m. and reflect on who they are, what is life, what is truth. They used to meditate on this. And they used to read biographies and autobiographies of great people. And then they understood what is right and wrong. Are you getting my point? And when you hear such, exactly opposite opinion, extreme opinion, you get confused. This is one thing. Second thing, if you compare this subject with the syllabus of other subjects, the size of syllabus is comparatively less. So the question arises, what is to be read and what is not to be read? Now, since, 2013, almost 9 years papers are available in the market. If you look at the paper, you'll get fair sense of what you need to read. But if you don't do that, and if you resort to books available in the market, almost all of them try to give you more than necessary. And there it appears they are entering into deeper aspect of philosophy that should be strictly avoided. So ye jo baatein hai regarding this subject that we need to discuss today. Are you getting my point? So let's start with some basic points. I'll try to introduce you subject with some examples and see whether you can understand my intent of the today's session. Usually I start with some hypothetical scenario. So in this case, one scenario is you have caught a person, you suspect him to be a terrorist who knows a bomb that is kept in a city, and if it goes off, millions would die, for sure. So the question is, would you torture that suspected terrorist? What do you think? Yes, would you do that? In order to save millions of lives, would you do that? As an officer, you are entrusted with this responsibility, and choice lies with you, either to keep quiet or inquire, interrogate, but that person is not revealing any information. And if you delay
for some time, the bomb would go off and millions would die. So would you torture the person? आप उसको torture करेंगे क्या? What do you say? What is your opinion? Just you have to respond. You cannot act like, you cannot decide. In actual exam also, you have to make choices and you have to justify your choices. So what do you say? Would you torture? Okay, some people say, yes, I would torture. What is the logic behind saying this? That is it better to save million lives compared to suffering of one person. Even if that person is suspected terrorist, but still, if you get the information by torturing that person, you would ultimately save millions of lives. Simple calculations. है ना? So I would torture the person. अब इसमें twist ऐसा है, you torture that person, but that person still keeps mum, speaks nothing, and that only consolidates your suspicion. अगर कोई innocent होता, तो उसने क्या कहा होता कि भाई क्यों मुझे torture कर रहे हो? I have nothing to do with what you are saying. I am a simple common man who doesn't know anything about what you are saying. But that person speaks nothing. And that only, makes you more suspicious कि इसके पास कुछ तो है, which can be hidden. But now you realize no matter how much you torture him, he is not going to open the mouth. So next twist ऐसा है, he has a daughter of 3 years old. And if something is done to her, he can speak like a parrot. He would reveal everything. वो सब बोलने लग जाएगा automatic. So my second question is, would you torture her? Now, since, it is obviously clear, many people would say no. है ना? Despite having same situation, millions lives on the one hand and one person on the other hand. And yet, those who earlier said, yes, I would torture, in the second twist would say, no, I won't torture. Now, how would you justify this change in decision making? Of course, you can justify commonsensically, but if you study ethics sufficiently, your justification would be qualitatively different than those who have not done it. Right? Second question I often take is suicide unethical? So normally how people look at suicide, कि ये नहीं करना चाहिए था, है ना? They think it is wrong. Even though not outrightly unethical, they say it is wrong to commit suicide. Why? Because suicide is not the solution to the problem. है ना? But whenever they think like that, they are thinking from their own perspective, and this is often not realized. If you put yourself in the shoes of person who committed suicide, you might think like him or her. You would think that, okay, this is the only way I say or I think that my problems would be solved. Are you getting my point? So this inability to understand the feelings of others sometimes prevents you from taking ethical decisions. So what you need is empathy. Moreover, what we know about suicide is very commonsensical notion. But academics have studied suicide as an event. So for example, in sociology, have you studied sociology, any one of you? So in sociology, Emil Durkheim has studied the phenomenon of suicide, and he has categorized suicide into 4 categories. So one is altruistic suicide. Altruistic का मतलब क्या है? दूसरों के लिए किया जाता. So in old days, in polar region, old people used to sacrifice themselves in the cold just so that scarce food resources would last for the rest of the family. Even today, soldiers sacrifice themselves for the sake of nation. Even that is a suicide, but what we call, balidan, sacrifice. So this kind of suicide is altruistic. Second is fatalistic. Fatalistic is out of the, suffering which are caused due to strict rules and regulations. So this was normally witnessed in case of slaves. So who have not even basic freedom of speech.
अगर उनको बच्चे हो जाते थे तो उनको सेल आउट किया जाता था. सो यू कैनॉट क्लेम इवन योर किड इज योर ओन किड. So out of that, exploitation operation, they used to commit suicide. Then anomic suicide. Anomy means lawlessness. So suddenly जब law disappear हो जाता है, there is a vacuum in the society and in the lives of people. And they think that this vacuum cannot be filled and they commit suicide. So it happens in case of sudden richness as well. Suddenly जब लोग rich हो जाते हैं तो उनको मालूम नहीं होता है what is to be done with this wealth. They feel like there is nothing in life now. I have got everything. And this was in the news also. A few years back, an IT couple in Bangalore committed suicide by writing a note that we have done everything in our life and we don't think there is now any point to continue live like this. We have enjoyed everything which we wanted to and there is nothing more. So we happily commit suicide. Nobody should be blamed. Anomy. Anomy means lawlessness. Restriction रहा ही नहीं है. And finally, जो normally दिखाई देता है, that is egoistic suicide. Now, would you call each one of these suicide as unethical one? Not necessarily, right? Like altruistic suicide. People would honor such suicide, right? हम award देते हैं, है ना? परमवीर चक्र, अशोक चक्र, right? Are you getting my point? So when you decide what is right and wrong at your personal level, it is quite easy because as an adult, we have that fair sense. But when you try to decide at societal level, the complexity increases and you need to understand those various layers which go into deciding what is right and wrong. Is that clear? आपको समझ में आ रहा है what I'm trying to say here? All right, so let's start with basic things. First, what is ethics? I'll try to give you functional definitions. Ethics का मतलब है ऐसा science जो ह्यूमन बिहेवियर को राइट एंड रॉन्ग के पर्सपेक्टिव्स के स्टडी करता है. सो इथिक्स इज नथिंग बट सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्शन और बिहेवियर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इट्स राइटफुलनेस और wrongfulness. You can write this definition. Okay, ethics is a systematic study of human action or behavior. Systematic study of human action or behavior from the perspective of its rightfulness or wrongfulness. Its rightfulness or wrongfulness. So I'll give you simple example जो normally society में होता है. There are binaries in marriages like love marriage and arranged marriage, है ना? So whenever people make any choice whether to go for arranged marriage or love marriage, ethics also come into play. समझ में आ रहा है? या फिर ऑनर किलिंग होता है, वो भी क्यों होता है? बिकॉज दोज हु किल द अदर दे डोंट वांट सर्टेन काइंड ऑफ मैरिजेस. सो उनके अकॉर्डिंग ये इथिकल नहीं है. दोज हु अपोज सच मैरिजेस लाइक इंटरकास्ट इंटर रिलीजियस मैरिजेस. या फिर पॉलिटिकल लेवल पे ले लो, अभी जो महाराष्ट्र में हुआ है ड्रामा, राइट? सो यू वुड फाइंड बोथ द ओपिनियंस. Some people are saying yes, it is right thing that has happened. Other people are saying no. But this rightness and wrongfulness, इसका जो judgment अब लोग दे रहे हैं, that is more or like common sensical judgment. अगर आप उनको justification पूछोगे तो उसके अलग अलग justification हो सकते हैं. Economic हो सकता है, political हो सकता है, ideological हो सकता है, या कुछ values के basis पे होता है. But if you want to make ethical inquiry of all these things, you need to study ethics. समझ में आ रहा है? तो ऐसे भी केस स्टडी आपको सेक्शन बी में पूछे जाते हैं पेपर में, वो भी हम देखेंगे. ठीक है? सेकेंड क्वेश्चन विच should be there in your mind, that why its study has become so important. When this paper was introduced, do you know?
in the scheme of examination. When was this introduced? 2013, right? And now MPSC has become similar to UPSC. Same paper is there, GS4, is it not? So इसके पहले क्यों नहीं था? पहले ethics important नहीं था क्या? What do you think? See, let me tell you, which I often tell in every batch. People mistakenly believe there is a huge competition in civil services examination, which is wrong. Okay, by numbers you may get overwhelmed कि 6 लाख लोग बैठते हैं prelim में, which is true, but all of them are not serious aspirants. Why? Because they are not doing what is expected to be done. What is expected to be done in this exam, that you should take initiative to explore the subjects. What we do here, we passively rely on ready-made sources. Whether it is for current affair, whether it is for subjects, whether it is for optional, whatever you take name, and there are ready-made things available in the market which claim to make your task easy. But by making your task easy, they deprive you of qualitative preparation of civil services. And if you look at those who have made in the top 100, they have contributed on their own. Their involvement is more than anybody else. So आपको भी ये सवाल खुद से आने चाहिए मन में, and you should try to seek out answers on your own. आपको ये भी सवाल आना चाहिए कि which committee first recommended CSAT? Which committee first recommended ethics? Have you ever wondered about this? Or for that matter, that you are now going to enter into civil services, which is part of Indian administration. Have you bothered about history of Indian administration? कि ये पहले कैसे काम करता था, आज कैसे कर रहा है, और जो भी चेंज हुआ है उसके पीछे क्या वजह है? Because unless you understand that background, you won't be ready to serve the administration. समझ में आ रहा है? आज तक का जो जर्नी कंप्लीट किया है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ने, वो कैसे हुआ है? What factors went into it? ये आपको पहले देखना है. So ethics के पीछे भी कुछ सोशियो इकोनॉमिक रीजंस है. Because see, whatever changes are brought in administration are nothing but responses to the change situation. So कुछ तो अभी ऐसे चेंज हुआ है जो पहले नहीं था. And that's why this paper, new scheme of examination, is there, and your job is to find out those reasons. Of course, we are going to discuss these reasons when relevant part of syllabus would be there. But as a curious, educated person, that is what UPSC expects you to be. I want you to find out on your own. And that is an interesting exercise, rather than passively reading your textbooks. Of course, you have to do all that. But just go out of the way and find out more about this exam, more about this paper, read original notification, and see what kind of requirements have been laid out in the examination. All this is going to enrich you. Are you getting my point? अगर आप ये नहीं करोगे, you will be simply passive listener, which will never, sort of catalyze a thinking process in you. It will never happen. जिसको हम बोलते हैं ना कि in Marathi पालत्या गड्यावर पाणी, right? It will never happen that way. All right. Now, as a part of introduction of the subject, I would like to discuss some of the points. One is how to prepare this paper. ठीक है, तो इसमें 3 एलिमेंट हम देखते हैं. सिलेबस, आपका सिलेबस क्या है उसका अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. सेकंड, पेपर कैसा दिखता है, उसमें एलिमेंट्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या होते हैं. एंड थर्ड, फ्रॉम वेयर यू शुड स्टार्ट रीडिंग द कंटेंट. ये 3 इसेंशियल एलिमेंट है. इनको अगर आप ट्रायंगुलेट करोगे, द नेचर ऑफ एग्जामिनेशन बिकम्स क्लियर. सो आई वुड ऑलवेज से देम, दीज आर योर बाइबल्स, है ना. बाकी कुछ फैंसी मटेरियल मत पढ़ो. इवन डोंट रीड इवन इथिक्स नोट्स गिवन बाय यूनिक. दे शुड बी सेकेंडरी. फर्स्ट ये 3 चीजें हैं. ठीक है, अगर आपको एग्जामिनेशन को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है तो. देन उसके बाद में, बिकॉज मियर प्रिपरेशन इज नॉट इनफ, यू वांट टू कम्पीट विद द अदर्स, राइट. कितना भी आप कर लो, आउट ऑफ 6 लाख पीपल ओनली गिने चुने लोग ही सिलेक्ट होंगे. तो वो कंपटीशन भी है, राइट. सो उस कंपटीशन में आपका और एक एजेंडा होना चाहिए, दैट इज हाउ टू एक्सेल इन दिस पेपर, हाउ टू स्कोर बेटर मार्क्स इन दिस पेपर. और अगर आपको बेटर मार्क्स स्कोर करने, तो एक चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि इस पेपर की डिमांड क्या है. व्हाट काइंड ऑफ डिमांड्स आर पुट बाय दिस पेपर ऑन द एस्पिरेंट्स.
or what is expected from aspirants so that they would be given better marks. And once you know this, the next step is how to fulfill that demand. Uske do's and don'ts kya hai? So these are the 5 major elements that we are going to discuss today. Okay, so let's start with syllabus. ये table देखो and tell me what do you understand by looking at this table. What is your first impression? What is your first impression? You can speak in any language you want, even Marathi. Doesn't matter. Only South Indian is not permitted. Because I don't understand that. Hindi, Marathi, English. What is first impression? No first impression. कुछ भी नहीं. हाँ. सिलेबस है ये ठीक है. सिलेबस के बारे में क्या फर्स्ट इंप्रेशन? Correct. So first thing is it is not homogeneous. It has 3 distinct parts. So जो भी इसको पेपर को सिर्फ ethics बोलता है, it is not merely ethics. But ethics is central, but it is not merely ethics. It has other disciplines as well. So second discipline is social psychology and third is public administration. So in that sense, GS4 is also known as interdisciplinary paper. Is that clear? और अगर ये interdisciplinary है, तो इसका एक conclusion ये भी है, हर एक discipline का खुद का अपना approach होता है to solve the problems. The way ethics handle problem is different than the way social psychology responds to it, and the way public administration responds to it. Sometimes you need to take help of all the 3 disciplines to solve the problem. So first thing you need to learn is, as soon as you look at the question, you should be able to locate the question in a particular discipline. So question and syllabus का जो relation है, नाता है, that you should be able to establish. Okay, so पहला जो है उसको philosophical language में moral philosophy बोलते हैं, नैतिक तत्वज्ञान. अब इसका मेन जॉब क्या है? देखो, the major job of this discipline is to tell human beings what is right and wrong and how to decide what is right and wrong. Is that clear? So पहला जो लेफ्ट हैंड साइड का कॉलम है, इसका मेजर फंक्शन क्या है? To tell you what is right and wrong and also to tell you the process of deciding it. So इसमें एक जो पहला पॉइंट है, देखो, ethics and human interface. इसका मतलब क्या है? ह्यूमन लाइफ में इथिक्स का कनेक्शन कौन कौन से एस्पेक्ट से है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी क्या होते हैं. सेकंड देखो, थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स फ्रॉम इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड. नाउ वन क्यूरियस थिंग यू शुड नो हियर इज nowhere they have mentioned name of any philosopher. Not a single philosopher is mentioned in your syllabus. So it is left to you. आपको डिसाइड करना है कि कौन सा फिलोसोफर पढ़ना है, कौन सा छोड़ देना है फ्रॉम इथिक्स पर्सपेक्टिव, राइट? एंड दैट इज अगेन अ चैलेंज. द नेक्स्ट है फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस एंड प्रोबिटी. सो इसका मतलब ये है कि अगर आप कहते हो कि गवर्नमेंट हमारे सोसाइटी में चाहिए, तो इसका फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है, and from where it comes, and finally what are the different sources of ethical guidance and do you understand them very well. ठीक है? सो पहला जो कॉलम है उसका मेन कंसर्न है टू टेल यू व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग एंड हाउ टू डिसाइड इट, राइट? नाउ लेट्स मूव टू मिडिल. सोशल साइकोलॉजी, एज द नेम सजेस्ट, इट स्टडीज द साइकोलॉजी ऑफ द ग्रुप. बट इसमें क्या स्टडी किया जाता है? How a person behaves when he or she becomes part of the group. That is the main concern. So look at yourself. Do you behave in the same manner in a group compared to when you are alone? Not always, right? So for that I often give example of Mumbai local. Have you seen Mumbai local? Travel through it? So Mumbai local में there are separate coaches for women, है ना? अगर उसमें गलती से कोई आदमी घुस जाता है, what happens? अच्छे से खातिरदारी होगी उसकी, है ना? Is it not? And if it is rush hour, women would be more enraged.
इसको दिखाई नहीं देता क्या, पढ़ना नहीं आता क्या, कॉमन सेंस नहीं है क्या, एंड ऑल दीज थिंग्स विल स्टार्ट. इफ दे आर मोर एंग्री दे विल थ्रो हिम आउट. इतना भी हो सकता है. बट नाउ इमेजिन अ सिनेरियो, ही अगेन enters into the same course, but there is only one woman. Would she behave like that? उसके ढकेल देगी क्या, झगड़ा करेगी? नो. एट द मोस्ट व्हाट वुड शी से? इट इज नॉट फॉर यू, प्लीज गो समवेयर एल्स. सो ये जो डिफरेंस इन बिहेवियर है, ये कहां से आता है? बिकॉज ऑफ ग्रुप. और यू लुक एट पीपल व्हेन दे गो टू पिकनिक, youngsters particularly and boys, right? When they are in group out for trekking and picnic, they behave in the wildest possible manner. Is it not? A next version of Tarzan. But when they are alone, right, they try to pretend as if they are the coolest person in this world. Mr. Ram, Maryada Purushottam. Are you getting my point? So what does this tell you? Or look at your shopping behavior in group. Whenever you go to shopping in group along with your friends, you are the most aggressive person. You bargain a lot. You try to show how smart shopper you are and all that thing. But when you are alone, you are very modest. You are very cautious. Is it not? So ये कहाँ से आता है? From where does it come? Group gives you that power. Group gives you that leverage. Now see, all these examples are of course sort of humorous example, but there are some serious issues with the group behavior as well, right? जैसे mob lynching होता है. So जो लोगों को मार डालते हैं, do you think they are normal criminal, ordinary? No, right? They are not even criminal. They are common people like you and me. But when they become part of group, they become vicious. Or you look at gang rape, बहुत brutal होता है. सिर्फ रेप नहीं होता, मर्डर भी कर देते हैं. Those people who are involved in this activity, would they think when they are alone that they would do such thing? Never. ऐसा कभी भी सोचेंगे भी नहीं. करना तो दूर की बात है. समझ में आ रहा है? So sometimes as an administrator, you need to deal with groups, their dynamics, crowd management. You need to anticipate their emotions. Or what kind of emotions, when they come together, what kind of dangerous mixtures they would create. Unless you anticipate all these things in advance, you cannot take preventive measures, which are necessary in case of communal riots. है ना, जहां भी communal flare-up होते हैं, वहां you need an astute administrator who understand all these nitty-gritties. And that's why the syllabus has introduced two important topics. One is emotional intelligence, and second is attitude. Clear? So the major concern of this social psychology is how a person behaves when he or she is a part of group, right? So see, individually dekho, a woman would curse man, right? But when she becomes part of patriarchal setup, she becomes the main driver of patriarchy. Don't you know? Recent survey of National Family Health Survey, मैरिड वुमन का सर्वे किया था. More than 50% married women said beating by husband is good for woman. Have you read that survey? Please read. More than 50% married women have said this. So can you imagine? Why? Because they are part of patriarchal system. As an alone, they would curse the men, but as a part of system, they are the drivers. Why? Because by being agent of patriarchy, they highlight their own importance. So हम जो कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी. So what is this saying? When she becomes mother-in-law, she forgets her sufferings because she has now become agent of the system. So ये जो group behavior है, ये आपको मालूम होना चाहिए as an administrator. Third में देखो, public administration. Now see, as a person, once you are selected in civil services, you are going to spend most of your time in the administrative system. और वहां आपको ज्यादा से ज्यादा डिसीजन लेना है, rather than in political system, social system, cultural system. No, your most of the work would be concentrated in administration. So वहां राइट रॉन्ग कैसे डिसाइड किया जाता है, उसका सिस्टमेटिक स्टडी थर्ड कॉलम में होता है. So what we study here, what is aptitude, what are the foundational values, what is probity in governance, all these things are studied, and this discipline tries to provide systemic solution to the problem.
सो इथिक्स में मोर और लेस फोकस इज ऑन व्हाट, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, मिडल में सोसाइटी, एंड थर्ड में सिस्टमिक सोल्यूशन. सो हर एक जो, अब देखो सोशल साइकोलॉजी में जो है ना, इट विल नेवर ट्राई टू टेल यू व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, क्योंकि राइट एंड रॉन्ग बताना इज मोर लाइक प्रिस्क्रिप्टिव. प्रिस्क्रिप्टिव शुड बी, राइट एंड रॉन्ग क्या बताता है, क्या करना चाहिए. लेकिन सोशल साइकोलॉजी क्या करना चाहिए नहीं बताता, किस वजह से क्या होता है ये वो बताता है. सो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज सिंपली डिस्क्राइब्ड एंड एक्सप्लेन टू यू. बट इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में दोनों अप्रोच आते हैं, शुड भी आता है एंड डिस्क्रिप्टिव भी आता है. अब क्या हो रहा है ये भी आएगा, और क्या होना चाहिए ये भी आपको बताया जाएगा. So sometimes it is known as public administration is also a combination of what, ethics and social psychology. Is it not? Because when you will be in the administration, say police officer, IAS, collector, or diplomat, you won't be dealing with individuals alone. समझ में आ रहा है? You will be dealing with groups as well. Is that clear? So is this syllabus clear to you? Just basic outline. इस सिलेबस के 3 मेन पार्ट्स है, और हर एक पार्ट का क्या फंक्शन है, क्या जॉब है, ये आपको समझ लेना है. देन अकॉर्डिंगली यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग, बिकॉज यू कैनॉट ट्रीट सोशल साइकोलॉजी द वे यू ट्रीट इथिक्स. सोशल साइकोलॉजी में आप कभी ऐसा नहीं बोल सकते कि ये होना चाहिए, वैसा होना चाहिए. नो, दैट इज नॉट योर कंसर्न. आपको डिस्क्राइब करना आना चाहिए. बट इथिक्स में यू कैन से इट. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप इंडिविजुअलिस्टिक सोल्यूशन नहीं दे सकते. आपको जो भी सोल्यूशन देना है एज ए सिस्टमिक सोल्यूशन देना है. उसमें रूल्स आएंगे, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, लॉज आएंगे, इंस्टीट्यूशंस आएंगे. आप उधर नहीं लिख सकते कि मैं ये करूंगा वो करूंगा. नो, दैट इज नॉट योर एरिया. वहां सिस्टम काम करती है. सो ये जो पर्सपेक्टिव है आपको पहले से अगर मालूम होगा, अकॉर्डिंगली योर लैंग्वेज विल बी करेक्ट फॉर द आंसर. यू वुड कम टू नो व्हाट शुड बी करेक्ट वर्डिंग फॉर राइटिंग द आंसर. अदरवाइज उसमें प्रॉब्लम हो जाता है. एग्जामिनर इंस्टेंटली अंडरस्टैंड्स कि ये बंदे को सवाल समझ में नहीं आया, ये सवाल किस फील्ड से कनेक्टेड है, ये समझ में नहीं आया. इज दैट क्लियर? ऑल राइट. सो दिस इज अबाउट सिलेबस. नाउ स्ट्रक्चर देखो, पढ़ो. क्या आपको समझ में आ रहा है? यस. What is your first impression? Simple. There are 2 sections. One is about theory, another is about practical situations, which is known as case study. Right? But if you look at theory section and look at closely its element, you will realize it is not purely theory section. While I'll tell you. See, इसमें 12 सवाल आते हैं. Okay, and the per question marks range from 10 to 50. So almost जो weightage रहता है वो 50% रहता है हर एक सेक्शन को, and that's how your 250 marks question paper is prepared. Now if you look at section A, there are mainly 4 kinds of questions. One is based on quotes. So quotes are nothing but sayings of great people. So वो philosopher भी होंगे like Socrates, Aristotle, Plato, या फिर वो पॉलिटिकल लीडर भी होंगे. ठीक है, जैसे गांधी पॉलिटिकल लीडर थे, नेहरू पॉलिटिकल लीडर थे, एपीजे अब्दुल कलाम वाज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. राइट? तो उनके सेइंग्स होंगे, या फिर सोशल रिफॉर्मर्स रहेंगे, पोएट्स भी रहेंगे, जैसे थिरुवल्लुवर, उनका भी कोट आया था. ठीक है, तो ये भी रहेंगे. ग्लोबल लेवल के भी रहेंगे, जैसे अब्राहम लिंकन. सो वो इंडियन नहीं है, वो वेस्टर्न काउंटर पार्ट है, लेकिन उनका भी सेइंग है. तो इनको आपको क्या करना है, जो भी कोट है उसको एक्सप्लेन करना है. बट दे आस्क विथ लीडिंग क्वेश्चन, व्हाट डज इट मीन टू यू, और एक्सप्लेन दिस कोट इन प्रेजेंट कंटेक्स्ट. सो उस कोट का मीनिंग बता के उसका प्रेजेंट में कहां रिलेवेंस है ये आपको बताना है. सो ये जो सेकंड पार्ट है ना, टू कनेक्ट द कोट विद द प्रेजेंट, यू नीड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ करंट अफेयर्स. सिर्फ ऊपर से पढ़ोगे तो कभी नहीं होगा.
समझ में आ रहा है? अभी करंट में ऐसा क्या हो रहा है जहां ये कोर्ट एक्ट है, जहां ये कोर्ट कुछ सोल्यूशन दे रहा है, जहां ये कोर्ट कुछ प्रॉब्लम हाईलाइट कर रहा है। समझ में आ रहा है? सो दैट डिमांड हैज टू बी मेड बाय सेकंड पार्ट ऑफ योर आंसर. So it is again not purely theory paper. It is again involves what? Current affairs. ठीक है. सेकेंड कैटेगरी देखो, एग्जाम्पल्स. सो इसमें इस कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन में द मेजर एम्फेसिस ऑफ द क्वेश्चन इज अंडरस्टैंडिंग योर जनरल अवेयरनेस अबाउट द कंसेप्ट. ठीक है. सो देखो ऐसे एग्जाम्पल देंगे कि इन आवर सोसाइटी देयर आर कॉन्ट्रास्टिंग एटीट्यूड्स अबाउट कास्ट सिस्टम. एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स. सो पहले आपको कास्ट सिस्टम मालूम होनी चाहिए, उसमें कॉन्ट्रास्टिंग एटीट्यूड किसको बोलते हैं मालूम होना चाहिए, एंड व्हाट आर इट्स एग्जाम्पल्स. समझ में आ रहा है? सो सोल फोकस ऑफ दिस क्वेश्चन इज चेकिंग योर करंट अवेयरनेस अबाउट द कंसेप्ट्स व्हिच आर इन द सिलेबस. सो एटीट्यूड इज अ कंसेप्ट इन योर सिलेबस दैट वी हैड सीन इन मिडिल कॉलम. लेकिन उसके बारे में करंट में आपने कुछ देखा है क्या? Can you cite it nicely here according to the demand of the question? ये चेक किया जाता है. Is that clear? Now third देखो, concepts, definitions and interlinkages. So इसमें तीन कैटेगरी के सवाल आते हैं. एक simple straightforward definition. So आपको पूछेंगे what is ethics, what is value. ये जब सवाल आएगा, you can simply quote the authoritative definition as it is verbatim. But when the question is what do you understand by values, what do you understand by ethics, यहां आपको सिर्फ डेफिनेशन लिख के काम नहीं चलेगा. आपको क्या करना है? यू हैव टू कन्वर्ट दैट डेफिनेशन इनटू योर ओन वर्ड्स, और आपको खुद का अंडरस्टैंडिंग दिखाना है कि मुझे इससे क्या समझ में आया. राइट? समटाइम्स दे आस्क द कनेक्शन बिटवीन टू और मोर कंसेप्ट. So for example, once there was question that in what way emotional intelligence helps in ethical decision making. So पहले आपको emotional intelligence मालूम होना चाहिए, then ethical decision making मालूम होना चाहिए, and you should understand the exact connection between two. Then only your example would be relevant. And finally, application of concept in public and private life. अब इसमें क्या होता है? They try to see whether you can provide some solution by using the concept. So simple question था कि how would you improve the people's emotional intelligence around you. So आपके आजू बाजू में जो लोग काम कर रहे हैं उनका इमोशनल इंटेलिजेंस आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो. So it is not simply saying what is emotional intelligence, right, or what are the different dimensions of emotional intelligence. You have to give concrete steps so that you can demonstrate this is how the emotional intelligence improves. Is that clear? So अगर आप चार ही कैटेगरी को क्लोजली एनालाइज करोगे, all four involve one way or other way examples, current affairs, and that's why this section is also not purely theoretical section. समझ में आ रहा है? This section also demands your awareness of current affairs. Now in section B, जो राइट हैंड साइड का कॉलम है, वहां every year 6 case studies are asked, not one less, not one more. ठीक है. एंड द लेंथ ऑफ आंसर इज इन बिटवीन 250 to 300, डिपेंड्स, है ना. अगर 250 वर्ड्स का आंसर है देन द मार्क्स गिवन आर 20. इफ 300 वर्ड्स का है देन मार्क्स गिवन आर 25. इसमें भी मेनली दो कैटेगरी के केस स्टडीज आते हैं. एक है सिचुएशन देते हैं आपको और उसमें बताते कि इसमें आपके पास ऑप्शन क्या है, how would you provide the solution and justify and evaluate the option. So sometimes they give you options on their own, आपको उनको सिर्फ evaluate करना है, but sometimes they ask you to create options. Then you need to know what are the techniques by using which you can create different options, and then उनको evaluate करना है. But sometimes case studies are based on issues in India. So for example, migration is an issue which was particularly noticed during lockdown, first lockdown, है ना. या फिर safety of women in public places, that is major issue, right? Whenever women travel somewhere, they don't feel safe, their safety integrity is threatened. या फिर environment versus development issue है, या फिर child labor का issue है. ये issue जो है, इनके ethical angle आपको समझ में आते हैं क्या? इसका अंडरस्टैंडिंग सेकंड कैटेगरी में चेक किया जाता है.
So these case studies constitute another 50% part of your paper. So once you know the structure, once you know the nature of the questions, accordingly you can connect the question to your syllabus. ये connection शुरू होना चाहिए, right? अगर ये connection आपको समझ में आता है, then only you'll come to know what are the apt resources that you should refer to. Is that clear? So ये आपको structure समझ में आ गया? Yes. Clear हो गया? All right. अब next देखते हैं. इसी स्ट्रक्चर को सामने रखकर एंड सिलेबस को सामने रखकर आई विल शो यू सम ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ओके, सो देखो पहला सवाल एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस से है. कैन यू रीड दिस? So question क्या आया है? What do you understand? So here you don't have to write definitions. You have to rephrase the definitions. ये पहला पार्ट है. Second part क्या है? In what way it is important to be ethical along with being professionally competent? So इसमें assumption क्या है? If a person is professionally competent, why he or she should be ethical as well? So आपको क्या करना है? इसके पॉजिटिव इंपैक्ट भी बताने हैं when that person becomes ethical, and नेगेटिव भी बताना है कि वो पर्सन अनइथिकल होगा तो क्या होगा. सो फॉर एग्जांपल डॉक्टर, सर्जन अच्छा है, सो इथिकल होगा तो क्या होगा? ही वुड ट्रीट हिज पेशेंट फेयरली. बट अगर अनइथिकल होगा तो इधर का किडनी उधर, राइट? इज इट नॉट? सो इन अ वे दिस क्वेश्चन इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स योर सिलेबस that it is about consequences of ethics in human life, and that's why it is connected with ethics and human interface. कि human life में ethics की जगह किधर है? Do you understand that? Is that clear? या फिर दूसरा सवाल देखो. The crisis of values in modern times. Crisis का मतलब क्या है? What do you understand by crisis? Scarcity. ठीक है, थोड़ा vocabulary पे ध्यान दो. Crisis means scarcity of what modern values in modern times is traced to narrow perception of the good life. So इसमें देखो कितने कंसेप्ट आए हैं. मॉडर्न लाइफ, राइट? देन गुड लाइफ, ये भी आया है, ठीक है. एंड क्या है? वैल्यूज. सो क्राइसिस ऑफ वैल्यूज मीन्स व्हाट? यू डोंट हैव गुड वैल्यूज. इसको क्राइसिस बोलते हैं, राइट? और ये किस वजह से आ रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? बिकॉज यू हैव नैरो व्यू अबाउट व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स ए गुड लाइफ. सो व्हाट यू हैव टू गिव हियर? ऑब्जर्वेशन देना है, डिस्क्रिप्शन देना है, प्रिस्क्रिप्टिव आंसर नहीं लिखना है. इज दैट क्लियर? सिर्फ डिस्क्राइब करना है. प्रिस्क्रिप्टिव कब लिखना है? व्हेन द क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू टेक अ स्टैंड. जैसे पहले में था, पहले में प्रिस्क्रिप्टिव था सेकंड पार्ट, बट इसमें प्रिस्क्रिप्टिव है क्या? नहीं है. दे आर सिंपली डिस्क्राइबिंग व्हाट इज बीइंग सीन, व्हाट इज बीइंग एक्सपीरियंस्ड. सो नैरो परसेप्शन ऑफ गुड लाइफ मतलब क्या, ये आपको बताना है. सो लोग जो आज मॉडर्न लाइफ में जो स्टैंडर्ड्स क्रिएट करते हैं कि आपको 6 फिगर सैलरी चाहिए, अच्छा सा फ्लैट चाहिए, ऑटोमोबाइल चाहिए, यूनिट बैंक बैलेंस, फॉरेन वेकेशन, इसको मॉडर्न लाइफ में अच्छा लाइफ कहा है, राइट? But according to ethics, this is a narrow perception. And if people adhere to this only, it creates a scarcity of good values, which involves what? Compassion, empathy, tolerance, openness, frugality, honesty. Is it not? So people क्या करने लग जाते हैं? They try to achieve all these elements of so-called good life by any means. And they end up adopting unethical practices as well. And those unethical practices create scarcity of good values. ये लॉजिकल चेंज जो है ये आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए विद एग्जांपल्स. इज दैट क्लियर? आप इसको और भी क्वालिटी दे सकते हो इफ एट ऑल यू अंडरस्टैंड हु आर दोस थिंकर्स हु हैव टॉक्ड अबाउट गुड लाइफ, हु हैव टॉक्ड अबाउट गुड वैल्यूज. अगर उनका पर्सपेक्टिव भी ले आओगे, देन योर आंसर वुड स्टैंड अपार्ट फ्रॉम कॉमन सेंसिकल आंसर ऑफ द क्राउड. देखो, एज एन एडल्ट यू नो हाउ टू राइट आंसर टू दीज टू क्वेश्चंस. कॉमन सेंसिकली आप लिख सकते हो, बट इफ यू स्टडी एथिक्स वेल,
your answer would stand apart from the others in terms of quality of argument. समझ में आ रहा है? And that's what you have to learn in ethics. All right. Next section देखो, moral philosophy का है. The good of an individual is contained in the good of all. So is it not commonsensical? अगर सबका भला हो जाएगा तो एक का भी भला हो जाएगा. But if you understand who has said this, then your perspective becomes more enriched. ये किसने कहा है ये आपको मालूम होना चाहिए, और इसके प्रिंसिपल के ऊपर अभी समाज में कौन से इंप्लीमेंटेशन हो रहे हैं इस प्रिंसिपल के, ये भी आपको मालूम होना चाहिए. Is that clear? So do you know who has said it? Yes. Are you aware who has said it? All right. In ethics you'll learn that, but I will tell you. Gandhi said सर्वोदय. सर्वोदय का जो कंसेप्ट है गांधी का, या फिर मोदी also said no, सबका साथ सबका विकास. So what? Is it not? Welfare of all would lead to welfare of individual. So ये जो पर्सपेक्टिव है ये आपको क्या करेगा? It makes your answer better. या फिर ये सवाल देखो, एनालाइज जॉन रॉल्स कंसेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट. अब इसको आंसर करने के लिए यू नीड टू नो हु इज जॉन रॉल्स. विदाउट दैट वॉट एवर यू राइट हैज नो मीनिंग. जॉन रॉल्स मालूम होना चाहिए, उसका सोशल जस्टिस का कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, और इन दोनों को आपको किससे कनेक्ट करना है? इंडियन कॉन्टेक्स्ट. इंडिया में अब उसका एप्लीकेशन कहाँ दिखाई दे रहा है वो आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना है, and then only you will get better marks. So very specific. So see, the question asked in ethics lie on two spectrums. One are open-ended. Open-ended like this, you know, everybody aspires for happiness. What is happiness mean to you? अब आप जो आंसर लिखोगे वो इनके जैसा रहेगा क्या? नहीं रहेगा. Because what is happiness according to you may not be similar according to him. So ऐसे open-ended सवाल भी रहते हैं एंड ऐसे स्पेसिफिक भी रहते हैं जहां कॉमन एलिमेंट सबका सेम होना चाहिए. आप जॉन रॉल्स बोला है तो आप बेंथम के बारे में नहीं लिख सकते या मिल के बारे में नहीं लिख सकते. इज दैट क्लियर? सो दिस टू काइंड ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस यू शुड प्रिपेयर योरसेल्फ टू हैंडल. राइट? ये जो डिफरेंसेस है ये आपको समझ लेना है. या फिर कोट देखो, एंगर एंड इनटॉलरेंस आर द एनिमीज ऑफ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग. सो इसमें इमोशन भी इन्वॉल्व है ना. एंगर क्या है? इमोशन है. इनटॉलरेंस क्या है? इमोशन है. राइट? सो इमोशनल इंटेलिजेंस का आपने स्टडी किया है, देन यू कैन बेटर हाईलाइट द इम्पैक्ट ऑफ इमोशन ऑन रैशनल थिंकिंग. इन व्हाट वे इमोशन डजंट अलाउ अस टू थिंक रैशनल, ये आप लिख सकते हो. इज इट नॉट? सो सिंपली एक्सप्लेन कोट इज नॉट इनफ. यू हैव टू एक्सप्लेन कोट विथ सम इनसाइट्स. Insights of what? Theories, principles, thinkers, their sayings. ये आपको समझ लेना है. Is that clear? Then some more examples. Social psychology में देखो, straightforward सवाल है. Young people with ethical conduct are not willing to come forward to join active politics. Suggest steps to motivate them to come forward. Now, where will you locate this क्वेश्चन इनटू सिलेबस? कहाँ आएगा ये? एथिक्स में आएगा या सोशल साइकोलॉजी में आएगा या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा? बताओ. यस, क्या लगता है आपको कहाँ आएगा ये? सोशल साइकोलॉजी आएगा क्योंकि मोटिवेशन ये पार्ट है. राइट? बट वो इथिक्स में भी आ सकता है. व्हाई? बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट इथिकल कंडक्ट, है ना. सो दोनों भी आ सकता है. इज पार्ट भी है, क्या हो रहा है, एंड स्टेप्स पूछे इसलिए शुड पार्ट भी. आपको बोला है ना, सजेस्ट स्टेप्स टू मोटिवेट देम. सो मोटिवेट करना मतलब उनको बताना है ना आपको कि ये करो, वो करो, ऐसा करो, तभी वो मोटिवेट हो सकते हैं. सो शुड पार्ट भी आएगा, एंड शुड पार्ट वुड बी इन्फॉर्म बाय हुम? इथिक्स. करेक्ट? सो ये आपको हमेशा सोचना है. दिस इज क्रक्स ऑफ इथिक्स प्रिपरेशन. सिर्फ किताबें पढ़ना डजंट मीन प्रिपरेशन. यू हैव टू थिंक ऑलवेज in terms of how the questions would be asked in paper and how I can tackle them. ये thinking हमेशा होनी चाहिए whenever you read any topic. ये real preparation है. सिर्फ read करना is not real preparation, right? Second देखो, direct सवाल है, what is emotional intelligence? How can it be developed in people?
सो देखो इथिक्स का एक पेक्युलरिटी बताता हूँ. इन मेनी क्वेश्चंस देयर इज नो स्कोप टू राइट इंट्रोडक्शन, मेन पार्ट एंड कंक्लूजन. व्हाई? बिकॉज इन वन क्वेश्चन देयर आर मल्टीपल क्वेश्चंस. सो इट ऑलरेडी ईट्स अप योर स्पेस. सो इसमें दो सवाल है. So you have to naturally give 75 words to one part and 75 words to other. Then only you can write within the limit of 150 words. So पहला जो सवाल है इसमें भी दो सवाल है. Is it not? What is emotional intelligence? एक paragraph. How can it be developed? Second paragraph. And third, how does it help an individual in taking ethical decision? ये third वाला. So unless you rationalize your space according to demand, you cannot give justice to the question. और ये थिंकिंग प्रोसेस हमेशा होनी चाहिए. इज दैट क्लियर? एंड सी इन एवरी ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन दे आर डिमांडिंग लिंकेज ऑफ द कंसेप्ट, थियरी और वॉट एवर दे आर सेइंग विद द करंट. सो करंट एंड इट्स स्टडी इज एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन. यू कैनॉट अवॉइड इट नो मैटर व्हाट. इज दैट क्लियर? सो ये हो गया सोशल साइकोलॉजी के बारे में. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखो. Discuss the public service code as recommended by second ARC. Second ARC means Administrative Reforms Commission. अब ये भी बहुत स्पेसिफिक हो गया है, राइट? आप मन से लिख सकते हो क्या ARC ने ये बोला वो बोला? नहीं लिख सकते. Unless you have read that, you cannot write. Clear? Second वाला देखो. Distinguish between code of ethics, code of conduct with suitable example. अब इसमें क्या हो रहा है? सेम स्पेसिफिक है. So public administration ये जो एरिया है, there you need to study some part of Indian administration and some part of government document like second ARC. ठीक है? या फिर ये सवाल देखो. What do you understand by probity in public life? What are the difficulties in practicing it in the present time? How can these difficulties be overcome? So देखो एक सवाल में तीन है. Define करो, difficulties बताओ and solution बताओ. सो 150 में आपको बहुत ही एग्जैक्ट एंड कंसाइज लिखना है. जितना आप वर्बोज लिखोगे उतना आप खुद के मार्क्स कम करोगे. सो दिस प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग कंसाइजली शुड स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग. एंड आपको मालूम है एक्चुअल एग्जाम में कितना लिखना पड़ता है? यस, पर पेपर यू नीड टू राइट 3000 वर्ड्स. ऐसे दिन में 2 पेपर लिखने हैं. सो 6 घंटा आपको लिखना है. अनलेस यू हैव डेवलप्ड दैट स्टैमिना, you won't complete your target. So ये आपको कहाँ लिख के लेना है? From the day one you should start writing 1 page per day. कुछ भी लिखो लेकिन 1 पेज हमेशा आपको हर रोज लिखना है. Like the way you eat food every day, वैसे हर रोज 1 पेज लिखना है for the sake of practice. कुछ भी लिखो, मन से लिखो, देख के लिखो, या फिर आंसर लिखो, ऐसे लिखो, जो भी लिखना है वो लिखो. But every day you have to write 1 page. Because it has been our experience, those who somehow pass prelim, they have not practiced writing, they end up crying. क्योंकि 1-1.5 घंटे में उनका हाथ पैरालाइज हो जाता है. Because stamina is not there. Writing for 6 hours is not a joke. ठीक है, ये हमने कभी किया नहीं होता है. Even in our college exams, writing is not that much, even though paper is for 3 hours. अब यहाँ तो बहुत लिखना है, subjective है. Then it becomes a new challenge. Is that clear? ठीक है. अब केस स्टडी देखो. कैन यू रीड दिस? दिस इज नोन एज सिचुएशन बेस्ड केस स्टडी. ठीक है, तो इसमें क्या होता है? आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है एंड समटाइम्स दे गिव यू ऑप्शंस. सो यहां देखो उन्होंने खुद ने 3 ऑप्शन दिए हैं. पहले पढ़ो, देन यू विल अंडरस्टैंड. So what is happening here? Simple. Some people are out there who don't want to work and they don't let others to work. You have been sent to correct the situation, but it backfires on you.
जो भी आप करेक्टिव एक्शन लेते हो दैट डजंट वर्क. ओके, बट व्हाट हैपेंस इंस्टेड, अ फॉल्स केस इज फाइल्ड अगेंस्ट यू. समझ में आ रहा है? सेक्सुअल हरासमेंट केस. And now they have given you option. You have to evaluate the option. Evaluation का मतलब merits and demerits बताओ, पॉजिटिव निगेटिव्स बताओ, एंड फाइनली क्या बोला है, सजेस्ट एनी अदर पॉसिबल ऑप्शन. सो ये तीन तो है ही, आपको और चौथा लगता है तो वो भी बताओ, और इन सबको इवेल्युएट करो एंड फाइनली टेल व्हाट विल यू डू एंड गिव रीजंस. और ये सब आपको 250 वर्ड्स में फिट करना है. एंड फॉर दैट यू नीड टू नो स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर. See, the way I said in section A is not applicable here. In section A, there is no scope to give structure. At the most, you can give logical flow. But here, you need to have a proper structure. Then only you can justify your answer. ठीक है? अगर आपको ऐसा होगा कि एक सेक्शन में ज्यादा लिखा है, दूसरे में ज्यादा नहीं लिखा है, तो ये हो जाएगा इनकोहेरेंट बोलते हैं जिसको. आपको ये पहले डिसाइड करना है कि किसको मैं कितना स्पेस दूंगा विद इन आंसर. बिकॉज सी अगेन इसमें मल्टीपल सवाल है ना, कि ऑप्शन को इवेल्युएट करना है जो दिए है उसको, फिर और एक ऑप्शन देना है उसको भी इवेल्युएट करना है, देन फाइनल एक्शन बताना है, देन रीजन देना है. सो ये जो एलिमेंट्स है इनको आपको ठीक तरह से कैटेगराइज करना पड़ेगा. उनका स्पेस ऑलरेडी डिसाइड करना पड़ेगा कि इसको कितना वेटेज देना है. ठीक है, ये हुआ सिचुएशन बेस्ड केस स्टडी जिसमें ऑप्शन होते हैं. मैं आपको सेकंड वाला बताता हूं. ये देखो, इसमें सिर्फ सवाल पढ़ो ए बी, सिचुएशन मत पढ़ो. उन्होंने ऑप्शन अभी आपको दिए ही नहीं है, राइट? क्या बोला है आपको? व्हाट ऑप्शंस आर अवेलेबल टू यू. सो जब भी ऐसा सिचुएशन आता है और आपको ऑप्शन क्रिएट करने के लिए बोला है, कम से कम यू हैव टू क्रिएट 3 ऑप्शंस. ठीक है, देन ओनली यू कैन जस्टिफाई योर आंसर. एंड सेकंड क्या है, इवैल्यूएट ईच ऑप्शन, सेम choose the option which you would adopt giving reasons. So ये जो 2 केस स्टडी देखे हमने, these two both belong to option based case studies, जहां आपको सिचुएशन दी जाती है and you are expected to solve the problem. आपको कॉन्क्रीट सोल्यूशन देना है इसमें. ठीक है, लेकिन कुछ केस स्टडी ऐसे रहते हैं, जैसे ये पढ़ो. इसमें क्या होता है देखो, read and tell me what it is all about. किस बारे में है ये? इट इज अबाउट एनवायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट. और उन्होंने ये बोला है आप एक को चूज करके दूसरे को स्टॉप नहीं कर सकते. कौन सा? सो व्हाट इज नीडेड हियर इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सो इसमें कॉन्क्रीट सोल्यूशन इज नॉट एक्सपेक्टेड. इसमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इश्यू एंड अवेयरनेस अबाउट द एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी, ये आपको बताना है. It is not expected that you would give something innovative solution, no, because you don't have that experience. But at least आपको awareness है क्या, उसमें से जो ethical issues create होते हैं उनका awareness है क्या, and what system currently doing, are you aware of that? That is being checked. So ये जो है second category of case study, issue based case study, इसमें solution is not sought. What is sought is your understanding of the issue. ये आपको बताना है. अगर इसमें कोई बोलता है कि मैं सिंगल हैंडेडली इसको सॉल्व करूंगा, देन इट इज इम्प्रैक्टिकल, बिकॉज इट इज बिगर देन द ह्यूमैनिटी इटसेल्फ, है ना. तो एक आदमी इसको सॉल्व नहीं कर सकता, या आपको समझ लेके रिस्पॉन्स देना है, देन इट अपीयर्स अ मैच्योर रिस्पॉन्स. अदरवाइज इट इज सॉर्ट ऑफ नॉट अंडरस्टूड क्वेश्चन. आपको सवाल समझ में नहीं आया, ये क्लियर हो जाता है, राइट? अब स्टडी कहां से करना है, दैट इज अ मेजर क्वेश्चन. So what we so far discussed, syllabus, उसके component, demand, then question paper, उसके sections, section के types of questions, okay, then we also took some examples of questions. Now we need to know from where to study. कौन से ऐसे resources है which if you study sincerely would give you rich dividend. So पहला जो है वो है Justice by Michael Sandel, ये लिख लो आप. Justice by Michael Sandel. Michael Sandel
is a professor from Harvard University. ओके, ये जो किताब है ना, इसको एटलीस्ट वंस यू शुड रीड इट थरोली. और वैसे उसका साइज ज्यादा नहीं है, एंड दिस इज फ्रीली अवेलेबल ऑन इंटरनेट एज वेल. ठीक है, आपको परचेस करने की जरूरत नहीं है. बट इफ एट ऑल यू वांट टू कीप इट इन योर कलेक्शन, इट इज बेटर. ठीक है, इसको एटलीस्ट वंस यू रीड इट थरोली, एंड देन once our teaching starts regularly, you would come to know what are those thinkers on which you need to focus. Right? So ये किसके लिए रहता है? It is needed for our first column, moral philosophy based topics. So syllabus में जो 3 कॉलम थे, उसमें जो लेफ्ट वाला कॉलम है, उसके लिए ये रिसोर्स बेस्ट है. Now I'll tell you one better part of this resource. ये जो हार्वर्ड में प्रोफेसर पढ़ाते हैं, उनका जो टीचिंग उधर चलता है, दैट इज रिकॉर्डेड. और वो जो टीचिंग है वो इस किताब के ऊपर है, एंड ऑल दो सेशंस आर रिकॉर्डेड एंड बीन पुट ऑन यूट्यूब. सो यू कैन वॉच दो सेशंस एंड रीड द बुक साइमल्टेनियसली. सो you'll come to know the better, content in a better fashion. ठीक है, सो वीडियोस भी देखना है आपको इन एडिशन टू रीडिंग द बुक. So please write down YouTube videos of Justice by Michael Sandel. ठीक है, this is important. Then second is NCRTs of psychology of 11th and 12th standard. ओके, इसमें लिखो 11th स्टैंडर्ड का 9th चैप्टर आपको पढ़ना है. 9th चैप्टर, 11th स्टैंडर्ड का 9th चैप्टर, एंड 12th स्टैंडर्ड का 6th and 7th चैप्टर. Okay, so these chapters are about emotion and perception, attitude and social influence. Okay, so ये चैप्टर आपको हेल्प करेंगे फॉर व्हाट? सोशल साइकोलॉजी बेस्ड टॉपिक्स. ओके, सो सोशल साइकोलॉजी के जो टॉपिक्स है उनके लिए हेल्प होगी. इफ यू वांट टू गो बियॉन्ड इट एंड स्टडी सम कंसेप्ट्स मोर, then for emotional intelligence there is one book by the same name, Emotional Intelligence by Daniel Goleman. Daniel Goleman. ठीक है, so this is famous book and it is also converted in other languages as well. ठीक है, so this is about social psychology. The next resource is second ARC 4th report, Ethics in Governance. ओके, इसमें सब चैप्टर पढ़ने हैं लेकिन उसमें सिलेक्टिव पार्ट पढ़ना है. सो देयर आर ऑल टुगेदर 9 चैप्टर्स इन दिस रिपोर्ट. ओके, सी आई विल टेल यू वन थिंग. सेकंड ARC हैज पब्लिश्ड 15 reports and these reports lay out the vision of reforms in Indian administration. So as a curious person, once in a while you should read all these reports like a storybook. तब भी आपको मालूम पड़ेगा कि अगले 10, 20 या 50 साल में in what way we are looking forward to reform the Indian administration as a society. So ये जो third resource है, this is useful for public administration based topics. ओके, सो इसमें क्या हो रहा है? आपका जो सिलेबस है थर्ड कॉलम का, मोस्ट पार्ट ऑफ दैट सिलेबस इज कवर्ड इन दिस रिसोर्स. सो 3 columns are fairly covered by these 3 resources. In addition to this, you have Niti Aayog's Good Practices Handbook. So that is for examples of good work done by administration. Okay.
सो इसके सामने आप लिख लो, इट इज फॉर व्हाट? राइटिंग डाउन एग्जांपल्स ऑफ गुड वर्क डन बाय इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन. Then next is notes by Unique Academy. Okay, इसमें भी syllabus cover है, but as I said, sometimes these notes and books end up giving you more than necessary. ठीक है. And last resource है आंसर राइटिंग का एक किताब क्रिएट किया है, where model answers are given for previous year questions. This is again published by Unique Publication. So ethics, integrity, aptitude, ये जो है ये किताब है for model answers and practice. Okay, so why this is needed? It is because in many courses that we have completed here, we find that despite teaching everything to students, they find sometimes difficult to answer the question. तो उनको वो गाइडलाइन मिले, इसलिए this comprehensive source has been prepared. Okay, so this is all about resources. ठीक है. Some people ask me about other books, but let me tell you frankly, I am not sort of optimistic about these all other resources, because some of the resources are of 600 pages. That is not even requirement of your syllabus. Why are you reading more? So mantra for GS4 is reading less and thinking more. Because see, commonsensically, they don't expect you to be ethicist. They don't expect you to be social psychologist or not even public administrator. But those who you are the people who have fair awareness of these three streams. That's it. So उसके लिए इतना पढ़ना, और सवाल भी देखो, theoretical सवाल है ही नहीं. These all questions are what they are checking your understanding of the concept, definitions, theories, and their linkage with examples and solutions. That's it. So ये आपको समझ लेके you have to accordingly decide your preparation strategy. Is that clear? ठीक है. So we have discussed three components: syllabus, question paper, and resources. Now let's move further. How to excel, how to score better marks. इसमें पहला जो है सवाल हमने पूछा था, why GS, क्यों है? तो इसका अपरेंट आंसर ऐसा है, टू चेक कैंडिडेट्स इथिक्स, है ना. वो आपका इथिक्स चेक कर रहे हैं. बिफोर सिलेक्टिंग यू टू बी एन ऑफिसर, दे वांट टू नो हु यू आर in terms of your values, in terms of your character, in terms of your dispositions, inclinations, all these things. But the next question which comes often to us is, can you check a candidate's ethics through a written exam? What do you think? चेक कर सकते हैं क्या? अगर आपने कल मुझे एक आंसर लिख के दिया, will that answer show me what kind of person you are? Yes? No, because people are smart enough, right, to write what is expected. है ना? They would say, no matter my values are, no matter who I am, I know what you expect from me. So अगर आपका सवाल जेंडर इक्वालिटी पे है, तो मैं बोलूंगा हाँ, मेन एंड वुमेन शुड वर्क टुगेदर एंड वुमेन शुड बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी. अगर आपका सवाल डाउरी के बारे में है, तो आई वुड राइट, नो डाउरी शुड नॉट बी टेकन, इट इज अ रिग्रेसिव प्रैक्टिस. Are you getting my point? Yeah, even though I am casteist, but in my answer I would write that caste discrimination is the most horrible practice that is found in India. ऐसे लोग भी हैं, है ना. तो इसको क्या बोलते हैं हम? Possibility of deception. They can deceive the examiner, right? So I often share that news of IPS officer who was caught in malpractices of exam. Have you heard about it? हैदराबाद में एक को पकड़ा गया था
IPS था, वो इम्प्रूवमेंट के लिए फिर से एग्जाम दे रहा था, मेन एग्जामिनेशन, एंड ही वाज यूजिंग ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी टू राइट द आंसर. सो जो मुन्ना भाई MBBS करता था, सेम. एंड आयरॉनिकली, you know what, he was topper of ethics. Can you imagine? UPSC had given him highest marks in ethics, and what he was doing in actual practice, he was doing exactly contrary to what ethics tells. ऐसा भी हो सकता है ना? जो लोग हैं वो रियल पिक्चर नहीं बताएंगे, वो ऐसा पिक्चर क्रिएट करेंगे विच UPSC वांट्स टू सी. ऐसा होता है ना? या फिर ऐसा भी हो सकता है, थियरी प्रैक्टिस डिवाइड बोलते हैं जिसको, कि एक्चुअल में आदमी अभी अच्छा है और वो बिलीव करता है कि मेरे पास गुड वैल्यूज है, आई एम गुड पर्सन, आई वांट टू जॉइन सिविल सर्विस फॉर गुड पर्पस एंड ऑल दीज थिंग्स. बट वंस दैट पर्सन जॉइन्स द सिविल सर्विस, would he remain good forever? No. There might be temptations, there might be pressure, there might be threat. है ना? ऐसा हो जाता है ना, आदमी को प्रेशर आ जाता है तो वो करप्शन करने लग जाता है, टेम्पटेशन आ जाते हैं, पावर इतना कभी देखा नहीं, पैसा इतना कभी देखा नहीं. सो ये चेंज भी हो सकता है फ्रॉम गुड टू बैड. डू यू अग्री विद दिस पॉसिबिलिटीज? यस, क्वाइट पॉसिबल है ना? बट इसका हैंडल कैसे करेंगे? हैंडल करने के दो तरीके हैं. फर्स्ट, इफ वी एज अ पीपल हु आर आउटसाइड द सिस्टम अंडरस्टैंड ऑल दिस, डोंट यू थिंक UPSC अंडरस्टैंड दिस एज वेल? जो वहां लोग बैठते हैं, जस्ट मिनट, जो वहां लोग बैठते हैं उनको ये मालूम नहीं होगा that people won't write every time what is correct inside them. They may hide true picture and they may give false picture. ये उनको भी मालूम होता है, right? And that's why they have organized personality tests for you as well. So despite having good marks in main, some people are often rejected in interview stage. Why? Because it is found at that stage even that the person doesn't have compatible values with the civil services values. है ना? In order to be an effective civil servant, you need certain kinds of values. अगर वो आपके पास नहीं है, no matter how much intelligent you are not going to serve the purpose, right? And to outsmart UPSC is not everybody's piece of cake. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हर एक को ये पॉसिबल नहीं है. ओनली फ्यू पीपल कैन डू दैट. बट डिस्पाइट नोइंग ऑल दिस, स्टिल UPSC गिव्स यू दिस चांस. इट गिव्स यू दिस चांस टू राइट द पेपर. व्हाई? दैट यू हैव टू थिंक. सो आपको सोचना है कि क्यों फिर दे रहे हो GS4 को, क्यों वो ला रहे हैं. So इसकी वजह अगर आप जान जाओगे, then you'll understand the purpose of preparing GS4. All right? So देखो, as a subject, what it does to you. First, it gives you an opportunity to reinforce your values. So जो भी आज आपकी values है, कौन सी भी है, if you think you are honest, compassionate, or you believe in equality, you believe in liberty, UPSC tells you think deeply about those values. Because there is every possibility that in this, race of modern life, people may not have adequate time to think about these things and their relevance. So UPSC क्या बोलता है? While studying ethics, pay attention to your values and try to understand what kind of values you have and are they relevant to the civil services. और अगर आपके पास अच्छी वैल्यू है, उनको कंसोलिडेट करो, उनके बारे में कन्विक्शन पैदा करो. सेकेंड पर्पस है टू क्रिटिकली एग्जामिन मोरल प्रैक्टिसेस. सो ऐसा भी हो सकता है ना, आप जहां से आते हैं वहां की मोरल प्रैक्टिसेस आर नॉट एट ऑल प्रोग्रेसिव, ऐसा भी हो सकता है. बट सिंस वी आर ब्रॉट अप इन सच एनवायरमेंट, वी टेंड टू बिलीव कि जो हमारा मोरल प्रैक्टिसेस है वो मोरल ही है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो जैसे देखो, रूरल एरिया में वुमेन आर ऑफन नॉट गिवन ऑटोनॉमी. They are not given decision making opportunities. Often they are given secondary position. If someone is born and brought up in such an environment, that person would also believe same thing, right? That men are more capable than women. Women should not have opportunities, but men should have.
सो ये जो बिलीफ है, ये जो प्रैक्टिसेस है, इसको आप एक बार क्रिटिकली तो एग्जामिन करो, ये सच में वैलिड है या जस्ट दे आर रिग्रेसिव प्रैक्टिसेस. ये अपॉर्चुनिटी यूपीएससी आपको देता है. सो वेदर दोज मोरल प्रैक्टिसेस आर लाइक टेकिंग डॉवरी और इवन चाइल्ड मैरिजेस आर स्टिल प्रिवेलेंट इन सम पार्ट ऑफ कंट्री, राइट? समझ में आ रहा है? या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इट इज स्टिल रैम्पेंट. सो इफ यू हैव फेस्ड इट, if you believe in it, just examine whether it is really good or bad. अगर वो सच में गुड होगा तो you'll validate it, but अगर bad होगा तो you have opportunity to reject it. Do you agree? Yes. Third, to help resolve moral dilemmas. So moral dilemma हम किसको बोलते हैं? Dilemma mainly क्या होता है? You have two choices and both are equally problematic, equally challenging, and that's why you don't know which to choose. You are in dilemma. So बहुत बार पर्सनल लाइफ में से डायलेमा आते हैं ना, है ना? जैसे फ्रेंड की वजह से डायलेमा आते हैं. फ्रेंड से लॉयल रहूं या घर वालों से झूठ बोलूं, है ना? सो उसके घर वाले फोन करते कि यार ये तुम्हारे साथ पढ़ाई कर रहा है क्या? You already know that person is not with you and not studying. He or she is with someone out there enjoying life. But what you decide then, whether to lie to parents or tell the truth. But telling the truth is difficult, right? It will break your friendship. But telling lies against your principle. So this is what moral dilemma is after all. So ethics teaches you how to overcome this vexing problem, which are part of normal life. ये हमेशा आते हैं. Even in public life or administration, there are certain values which conflict with each other. जैसे देखो, प्रॉफिट कमाना एंड सोशल वेलफेयर करना, these are not always compatible. समझ में आ रहा है? If you tend to go for social welfare, you will not have profit or it will be less. So क्या करें? ये जो डायलेमा है, ये इथिक्स आपको हेल्प करता है. How to resolve this? And finally, to overcome traditional biases or prejudices. So intentionally or unintentionally जो भी हमारे बीच में prejudices create किए गए हैं या produce हुए हैं, उनको overcome करना, that is an opportunity. So all these four things can be achieved by studying ethics, right? Then as a paper, as a subject we understood the purpose, but as a paper, one, to check your conviction. It means whatever you are saying and proposing, the first question is, are you really convinced about this first? आपको पहले खुद को वो कन्विंस होना चाहिए ना कि ये मुझे सही लग रहा है सच में. Then only you can convince the other. Or are you saying it for the sake of saying? That is what checked in your answers. So if you are not at all convinced about what you are saying, your arguments would appear more shallow. समझ में आ रहा है? Shallow arguments. You are just saying for the sake of saying. But if you are really convinced, it means you are giving well arguments, better arguments. ठीक है? या फिर second क्या होता है? To check your spontaneous responses. So बहुत बार in your exam you have less time to think and write. So जो instinctively होता है, अंदर जो होता है, वही बाहर आ जाता है. So that is known as spontaneous response. And see, you cannot fake all the time your responses. कभी ना कभी तो सच बाहर आ जाता है. Is that clear? That's why the importance of interrogation technique. जो criminal को interrogate करते हैं, they figure out the inconsistency in their responses. या फिर they create artificial inconsistency. कि वो बोलते कि यार तुमने तो पहले वो बोला था, अब ऐसे बोल रहे हो, इसका मतलब क्या है? अब जो खुद कन्विंस है कि मैं ऐसा बोल ही नहीं सकता because the truth is truth, वो नहीं बोलेगा. वो बोलेगा कि नहीं, मैंने ऐसे कहा ही नहीं था. But the person who is hiding something would get easily confused, and that reveals the truth. ऐसा इधर होता है. In your responses, if you are saying something which is not true, then there is inconsistency, and that inconsistency reveals something is problem, right? Third क्या होता है? To check your reconciliation of ideal and practical. Ideal का मतलब है driven by ideas, driven by ideology, driven by ideals. Ab how you put those ideals into practice is what they are saying.
So for example, honesty, transparency, accountability, these are ideals. But simply saying their name won't help you here. You need to develop some mechanisms, suggest some concrete steps, resolve some problems, give some solutions. ये जब आप करोगे, then only they'll come to know how you are putting them together, ideas into practice. And finally, to check your moral outlook or moral perception. कि morally आप किसी भी चीज के तरफ कैसे देखते हो, वो उनको confirm करना है. Is that clear? So as a paper and as a subject, these are some of the demands put by GS4 on you. And you need to decide how to meet these demands to score better marks. Clear? So देखिए कैसे हम meet करेंगे. Do's and don'ts है कुछ, ये आपको याद में रखने हैं. Okay, so पहले देखो. Try to give authentic examples. Authentic means real, current affairs से जुड़े such examples which people could easily believe. On the other hand, people end up giving cliched examples या hypothetical examples. ऐसा मत करो. Cliched बहुत बार क्या होता है, हर कोई उसके बारे में बोल रहा है, सोशल मीडिया पे उसका ही चर्चा चल रहा है. That is not believable. Rather you connect it with current affair which is in print media, which is proven, believable, true. ठीक है? So that gives credibility to your argument. अगर hypothetical दिया, इसका मतलब क्या है? It indicates you have not prepared current affair enough. है ना? क्योंकि in a country as vast as India, you are bound to find one example of one concept at least. ऐसा हो सकता है ना? इतना rare भी नहीं हो सकता life, right? So don't try to give hypothetical example. एक शेतकरी होता आणि त्याची शेती होती, मग भ्रष्टाचार केला. No, what? Why? Are you getting my point? You need to have some current affair to support your argument. Then well thought out justifications. जो भी आप रीजन दोगे आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए, उनके पीछे आपका थॉट प्रोसेस दिखाई देना चाहिए. आपने कैसे सोचा है वो लॉजिक रिवील होना चाहिए. Otherwise, sometimes what happens? People don't know how to connect one sentence to the other. Each sentence appears like island, independent in itself. और उसमें से क्या होता है? The answer is open to interpretation. जो well thought out होता है, उसमें जो लॉजिक का चैन है वो विजिबल होता है कि आप क्यों किसी को सपोर्ट दे रहे हो. वो जो लॉजिक है वो क्लियर होना चाहिए. Then only it makes believable. लेकिन उसके एग्जैक्टली अपोजिट क्या होता है? पीपल एंड अप गिविंग कैजुअल जस्टिफिकेशंस वेयर माइंड इज नॉट अप्लाइड, और दे एंड अप गिविंग बोरोड जस्टिफिकेशन कि उसने ये कहा था, इसने वो कहा था. नो, दूसरों ने क्या कहा है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. व्हाट यू आर सेइंग एंड व्हाई यू आर सेइंग दैट इज इंपॉर्टेंट, एंड दैट डिमांड्स एन एप्लीकेशन ऑफ माइंड. जो भी आप चूज कर रहे हो उसमें क्यों चूज कर रहे हो, इसके लिए आपको डीपर एस्पेक्ट दिखाना पड़ेगा. Then next, definition जब दोगे तो precise दे दो. Don't give rephrase definitions. या फिर contextual definition दे दो. जैसे देखो democracy है, democracy की एक ही definition होती है क्या? No, there are multiple definitions. So depending on the context of the question, you have to choose the definition and use it. But sometimes लोग क्या करते हैं? They end up giving vague and generic definitions, which are applicable everywhere. But that does indicate that you have not thought about the demand of the question. That's why you are using one definition everywhere. That should not happen. So precise का मतलब ये भी है contextual चाहिए. ठीक है? जैसे ethics. Ethics doesn't have one definition. It has multiple definitions. Ethics is also known as science of living well. So ये जो definition है science of living well, ये कहाँ इस्तेमाल करना है ये आपको सोचना पड़ेगा ना. You cannot use it instinctively. Is that clear? Then next, application to current affair. ये आपको हमेशा दिखाना है in order to explain your point. But sometimes people use dense and theoretical answer, which involves theory of thinkers. लेकिन उस पे फोकस ही नहीं. अगर थिंकर का नाम भी नहीं लिया है क्वेश्चन में, is there any point talk about thinker? No, not at all. And even if you talk about thinker, do it passingly. Don't focus too much. But जब लोगों के पास लिखने के लिए बहुत ज्यादा नहीं होता है, they end up using big names. महात्मा गांधी ने ऐसा बोला है, विवेकानंद ने ऐसा बोला है. No, that is not the demand of the question. Is that clear? And finally, reflect
conviction, आपका conviction दिखाई देना चाहिए. On the other hand, don't write superficial answers, run of the mill, common answers. ऐसा मत करो. So see, final message I would like to give here is, it is not enough to be correct. So सिर्फ correct choice करना इतना काफी नहीं है ethics में. It should also indicate that you really mean what you are choosing. मीन का मतलब क्या है कि आपका वो पर्पस है, आपका वो इंटेंशन है वही करना, और ये आपको दिखाना है कैसे. वेल थॉट आउट जस्टिफिकेशन एंड एग्जांपल्स. सो सिर्फ करेक्ट चॉइस करना इज नॉट द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू इन एथिक्स. उस चॉइस के पीछे जो रीजन है वो रीजन कन्विंसिंगली देना, ये भी आपका काम है. देन ओनली यू स्कोर बेटर मार्क्स. इज दैट क्लियर? सो ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर हो गया है पेपर का, एंड हाउ टू मीट दोज ऑब्जेक्टिव और डिमांड ये भी आपको अभी क्लियर हो गया है. ठीक है. नाउ आई विल टेक अप सम ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड बाय एस्पिरेंट्स. ओके, और उनके सवाल मैं आपको बता दूंगा, एंड आफ्टर दैट यू कैन आस्क मी डाउट्स. ठीक है. सो देखो, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन 1, आर देयर राइट एंड रॉन्ग आंसर्स इन एथिक्स? इजंट इंडिविजुअल फ्री टू चूज वंस ओन एथिक्स? So, ऐसा हमेशा लोगों को लगता है ना कि राइट एंड रॉन्ग, ऐसा कुछ नहीं होता. इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. जो मुझे राइट लगता है वो दूसरों को राइट लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है. एंड इफ दैट इज द केस, इज देयर वन परफेक्ट आंसर इन एथिक्स? सो इन सम केसेस वेयर दे एक्सपेक्ट सोल्यूशन, देयर इज क्लियरली राइट एंड रॉन्ग. इन ओपन एंडेड क्वेश्चन ऑफ कोर्स देयर वुड बी डिफरेंट आंसर्स, बट वेयर यू नीड कॉन्क्रीट स्पेसिफिक सोल्यूशंस, वेयर यू नीड टू टेक स्टैंड, देयर आर राइट एंड रॉन्ग आंसर. आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये भी सही है और वो भी सही है, ऐसा नहीं कह सकते. यू हैव टू टेक क्लियर स्टैंड एंड यू हैव टू जस्टिफाई दैट स्टैंड. Otherwise you would look like a fence sitter, you know, fence sitter who is undecided about right and wrong, who don't know how to decide right and wrong, and they don't want such people in the administration. Is that clear? So ethics के लिए आपको concrete solution देना है, right and wrong बताना है. That is the key demand. Second, do we have to write idealistic answers or practical answers? Now here people mistakenly believe idealistic means something which cannot be put into practice. That is wrong. Ethics never asks you to do something which is impossible. Ethics will ask only you to do those things which are doable. So idealistic का मतलब impractical नहीं, driven by ideals. But what they see, reconciliation of ideal and practical. ये आपको होना चाहिए. ठीक है. थर्ड सवाल जो हमेशा पूछा जाता है वो, do we have to quote philosophers in all answers? Again, not necessary, because it is your ethics that is being checked and not some philosophers. At the most, you can use philosopher to support your argument, but whatever you are going to say has to be your own opinion in first place. Is that clear? Even if you do not take name of the philosopher, still you will get good marks. But if the question is about philosopher like that one, analyze John Rawls's concept, then you have to write about philosopher at least once or twice. Is that clear? Fourth, will taking philosophy as an optional help in ethics paper? No. And yes, both. But the major question is choosing optional and not taking for the sake of ethics. Choosing optional should be based on one criteria, that is your interest in the subject. सिर्फ ethics के लिए मत ले लो, because in philosophy ethics has different nature altogether. As a discipline, there is altogether different demand is there. As a GS for ethics का demand अलग है. As a discipline, ethics का demand अलग है. So you'll get confused between these two. So choosing philosophy as an optional should be purely driven by your interest in philosophy. But if you study philosophy, one way or other way, it will help you in GS4 as well. But that doesn't mean you should choose philosophy for the sake of GS4. Fifth, is it necessary to use jargon, philosophical terms in answers? No. Why? Because it is general studies paper. You can write your answer in plain, simple English. As long as examiner understands the English and what you are saying, enough. You don't have to use philosophical jargons and terms. Is that clear? Next, can we use diagrams and flowcharts in answer? Of course. Wherever relevant, use it, because that breaks the monotony of writing. Okay? But wherever it is not relevant, don't overdo it. Okay? Stick to simple
self-explanatory diagrams. That is more than enough. Should I always give arguments for both sides of the issue asked? No, unless it is specifically asked. So जैसे evaluation बोलते हैं, तो evaluation में आपको pros and cons दोनों भी बताने हैं. But if the question is asking you to take one particular stand, don't give both the sides. It means you have not understood the question. ठीक है? So जैसे सवाल रहते critically analyze. That means you have to look at both the sides. But if the sawal is justified, then you cannot present the other side, because what you are asked is justified one side, which is given. You don't have to bother about the other side. Is that clear? And blunder क्या होता है बहुत बार? In their enthusiasm to take balanced stand, aspirants end up justifying bad things and rejecting good things. जो bad है उसमें अच्छा कैसा है ये बताते हैं, और जो अच्छा है उसमें bad क्या है ये बताते हैं. That not necessary. Then 8th, can I give examples of politicians and contemporary leaders? Of course, if they are free from controversy, if they are proven, if the politicians and leaders are convicted of some crimes or rewarded for some good things, of course give. But don't choose divisive and polarizing examples where opinion may not be, one and same, which may project you as a biased person. ऐसे example मत choose करो. ठीक है? So नाम ले सकते हो क्या? ले लो. But choose those examples which are free from controversy, where the matter of right and wrong is already settled. Is that clear? Then, should I write in bullet points or in paragraph? See, understand the demand of the style. Bullet point is used where you are expected to give some list. जो भी लिस्ट है वो अगर आपको देना है तब भी बुलेट पॉइंट यूज करो. बट वेयर यू आर एक्सपेक्टेड टू गिव लॉजिकल आर्गुमेंट्स और उसमें फ्लो चाहिए, नेवर यूज बुलेट पॉइंट्स, यूज सिंपल स्मॉल पैराग्राफ्स. सो दैट इज अ स्पेसिफिक टेक्निक यू हैव टू कीप इन माइंड. एंड फाइनली, व्हाट इज द रीजनेबल स्कोर टू टारगेट? So far highest score in ethics is 153. Last year's highest score is 131. Okay, so reasonably you can target for 110 plus. और अगर आपको 110 प्लस चाहिए तो मिनिमम आपको 220 मार्क्स का कवर करना है. एट द मोस्ट 250 करना ही है, बट अगर उतना नहीं हो पाया तो 220 मार्क्स का कवर करो, क्वालिटी आंसर दे दो, सो दैट यू विल गेट 50% मार्क्स. 110 वैसे ही आ जाएंगे. एंड फॉर दैट नेवर स्किप इवन अ सिंगल केस स्टडी, बिकॉज वन केस स्टडी इज फॉर 20 मार्क्स, 25 मार्क्स. सो अगर वन स्किप हो गया तो उतना मार्क्स चला जाएगा. सो केस स्टडी मत स्किप करो. इफ एट ऑल यू आर नॉट एबल टू कवर समथिंग, एटलीस्ट ट्राई टू सॉल्व ऑल केस स्टडीज. सेक्शन ए में एक सवाल छूट जाता है तो 10 मार्क जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, बट एक केस स्टडी छूटता है तो 25 मार्क्स विल बी गॉन. सो ये आपको ध्यान में रखते आपको प्रिपरेशन का स्ट्रेटेजी डिजाइन करना है. सो आई वुड सजेस्ट यू स्टार्ट विद जस्टिस बाय माइकल सैंडल and YouTube video and our notes. That is a good starting point. And as our lecture will resume, we will start with ethics as a subject, ethics as a discipline, and basic concepts. तब भी आपको मालूम पड़ेगा कि कौन से बेसिक कंसेप्ट है, उनका रिलेवेंस क्या है, कैसा है, and how you should prepare notes of ethics. Example कैसे देखने हैं. But before that, I would suggest you to join one group, write down its name. Telegram का ग्रुप है, यूनिक एथिक्स डिस्कशन ग्रुप. यूनिक एथिक्स डिस्कशन ग्रुप, ये टेलीग्राम चैनल पे है. ओके, टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पे. यहां हम इथिक्स का करंट अफेयर तो शेयर करते ही है, बट वी ऑल्सो शेयर डेली करंट अफेयर्स फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस. आपको क्या पढ़ना है न्यूज से वो हम बताते हैं. यू हैव टू रीड ऑन योर ओन, एंड बेस्ड ऑन दैट वी डिजाइन वीकली करंट अफेयर टेस्ट फॉर एवरी वीक, जो आपको यहां आके लिखनी है, सब्जेक्टिव रहती है वो. ठीक है, इट इज कंडक्टेड फॉर 1.5 आवर एवरी वीक फॉर ऑल यूनिक स्टूडेंट्स. ठीक है, सो यू स्टार्ट रीडिंग द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, start preparing your own notes of current affairs, which will include also ethics,
ठीक है. And as I said towards the beginning, be self-reliant in your preparation. You should take initiative to figure out many things on your own. Nobody should tell you कि आप ये ढूंढो वो ढूंढो. No, you should try to understand demand of the exam and accordingly try to meet the demand. और अभी तक के जो टॉपर्स है, रियल टॉपर्स, 100 में, पहले 200 में, ये जो टॉपर्स है, इनका खुद का करंट अफेयर का कंट्रीब्यूशन देखो या फिर नोट्स का प्रिपरेशन का कंट्रीब्यूशन देखो. दे हैव स्पेंट इनॉर्मस टाइम इन डूइंग दैट. दे नेवर रिलायड ऑन रेडीमेड नोट्स. At the best, ready-made notes were complementary to their own efforts, but they were not the primary resources. So accordingly, you should also adopt same strategy. You should start writing notes of current affairs or subject that you are studying, and target your year of attempt and accordingly preparing backward. See, at least 10 to 12 months should be given for main examination. उतना तो वक्त लगता ही है. If you don't give that much time, passing prelim has no meaning because you are going to flunk in May, and that is pure waste of time. So unless you are sure of main examination, be patient, wait for right opportunity. Because see, UPSC is positively biased towards fresh people, youngsters who are giving attempt and who reach to the interview stage in first attempt. They try to select such people. Right, they give soft treatment to these people. So yeah, आपको समझ लेना है. And that's why you should demonstrate UPSC that you are serious about your attempt. You are not wasting your attempt for the sake of experience, जो बहुत लोग करते हैं. That is not desirable. So ढंग से आप मेंस की प्रिपरेशन करो, नोट्स अच्छे से बनाओ, आंसर राइटिंग शुरू करो, उनको इवैल्यूएट करके ले लो. एंड वंस यू आर श्योर दैट एटलीस्ट स्टैटिक पार्ट एंड सम डायनामिक पार्ट ऑफ मेन एग्जामिनेशन along with optional is covered, then you should give as a fresher 5 to 6 months for prelims, and that is more than enough. Once you clear the prelims, whatever 3 months are available till main examination are enough to revise and write the mock test. Right? So if you adopt such a strategy, your attempt won't be wasted, and you won't have to spend more than 2 years in the course of preparation, because spending time more than 2 years has huge opportunity cost. 2 years में एक बंदा पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेता है, but this experience of preparing UPSC counts nowhere in your career. So जो भी 2 साल आपने डिसाइड किया है, I would give to UPSC, make them count by doing your planning smartly. उसको पेशेंटली ले लो. क्राउड मेंटेलिटी मत करो. क्राउड मेंटेलिटी क्या होता है? जब भी प्रीलिम पास आ जाता है, एवरीबडी स्टार्ट्स अप्लाइंग टू प्रीलिम, क्योंकि वो कर रहा है, वो कर रहा है, मुझे भी करना है. ये जो एंजाइटी है ना, यू शुड बी एबल टू ओवरकम दैट एंजाइटी. पेशेंटली थोड़ा करो, थोड़ा सा, you have to study yourself first, where you are. And see, again, not everyone is at the same place. Everybody has his or her own strength and weaknesses. So हर एक के लिए थोड़ा प्रिपरेशन का टाइम अलग अलग होगा. एक बंदे का स्पीड अगर x है तो दूसरे का x होगा, नॉट नेसेसरी, उसका y भी हो सकता है. स्पीड ऑफ प्रिपरेशन, and that varies, depends on your background, your liking for subject, your experience of graduation, post graduation. So बहुत बार ऐसा होता है ना कि कुछ लोग ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में ही पॉल साइंस पढ़ लेते, साइकोलॉजी पढ़ लेते. सो फॉर देम प्रिपेयरिंग दिस ऑप्शन बिकम्स इजी, बट दोज हु हैव स्विच्ड फ्रॉम इंजीनियरिंग टू सोशल साइंसेस, फॉर देम इट इज क्वाइट चैलेंजिंग. सो ये जो डिफरेंस है उनको समझ लेना है. सो आई ऑलवेज टेल माय स्टूडेंट्स, योर स्ट्रैटेजी इज योर ओन स्ट्रैटेजी, एंड इट शुड नॉट रिजेंबल्स लाइक अदर्स स्ट्रैटेजी, बिकॉज हु यू आर इज यूनिक इन योरसेल्फ. ये ध्यान में रख के यू प्रिपेयर योर स्ट्रैटेजी एंड स्टार्ट your preparation. ठीक है? All right. Any doubt, any question that you want to ask? I'm open. Go ahead. पूछो. 6th, diagram, flowchart. Use कर सकते हैं. Yes. Wherever they are relevant, use it. सवाल है? Understood everything what we have discussed? कोट्स नसतात, ते आपल्या नोट्स मध्ये दिलेले, टॉपिक वाइज.
What are the quotes on honesty? What are the quotes on power? What are the quotes on character? And you can also compile on your own. But see, don't target quote. Target the principle and concept. क्योंकि कोट इज लाइक वास्ट ओशन. नो, किसी ने क्या कहा है ये तो बहुत सारा है. हाउ विल यू प्रिपेयर? हाउ मच यू प्रिपेयर? सो आपको उनमें जो कंसेप्ट इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे ट्रुथ है, लॉयल्टी है, जस्टिस है, इनको अच्छे से समझ लो. देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड फिगर आउट द मीनिंग ऑफ द कोट. सो कंसेप्ट से शुरुआत करना है. दैट इज द फर्स्ट पॉइंट फॉर एथिक्स. Online people, if you at all you are there, please ask questions in your chat box, or you can raise your hand. I will unmute you. Yes, there are many people over here. Adesh, Arti, Bhagesh. Yes, you can ask me in chat box, or you can raise hand. I will unmute you, whichever way. Okay, have you started studying ethics? Not yet. Not even primary books. कुछ भी नहीं शुरुआत की. ठीक है, कोई बात नहीं. You start with those YouTube videos. They are interesting. उसमें क्या है ना, डायलॉग होता है between that professor and his students. So वो बहुत इंटरेस्टिंग है. Responses इंटरैक्टिव जब होता है, then it becomes very interesting. वन वे होता है तो सिर्फ आपको सुनना है, उससे कुछ मजा नहीं आता. जब बोलते दो लोग, then it becomes interesting, and that's why my all sessions of ethics are interactive. ठीक है. Anything else you want to ask about anything? Yes, Bhagesh. बोलो भागेश. Hello, sir. Hi. Good evening. Actually, I joined it late, so I missed the references, the books, and the YouTube videos you're talking about. So can you repeat those? So I Yeah, can I'll show you the resources. Yeah, these are the resources. Are these visible? Yes, sir. Take the screenshot, and you start with Justice by Michael Sandel. Michael Sandel is a professor from Harvard University, and he has converted his lecture series into books. This book, Justice. So while reading the book, you can start watching this YouTube video series. Okay, anything else that you are asking? No, sir. No, thank you. All right. Yeah. Any doubt? Anything you want to ask other than ethics? Still, you're welcome. See, even if you don't have subject knowledge, I would suggest you to write essays. ठीक है, क्योंकि इसी के लिए जनरल अवेयरनेस ऑल्सो समटाइम्स इज गुड इनफ. सो जो भी टॉपिक आपको फेमिलियर लगता है, इजी लगता है, उसको चूज करो एंड स्टार्ट टू एक्सपांड योर थॉट टिल 1000 वर्ड्स, क्योंकि वो तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, 1000 to 1200 वर्ड्स. सो वो करना पहले शुरू करो. एंड यू कैन हैव माय नंबर एंड यू कैन आस्क मी एनी डाउट ऑन दैट नंबर. लिख लो 8975791838. ठीक है. सो दिस इज टेलीग्राम, व्हाट्सएप, विक्रांत भोसले. So WhatsApp, SMS, Telegram, any means you want to communicate, any doubt you want to ask, but join that group, Unique Ethics Discussion group, and get into the group, start preparing, don't wait too long. ठीक है, current affair तो कर ही दो आप, there is no option to it, don't rely on any ready-made material, आपके खुद के subject wise notes होने चाहिए. So in that Telegram group, I have put one topper's notes of current affair. So उससे कुछ hints मिलेगी आपको कि कैसे उसने subject wise किया है, reader friendly किया है, and it would make your task easy going ahead.
ओके, ये इमीडिएटली उसके डिविडेंड नहीं मिलते, पहले आपको लगता है कि उसमें बहुत वक्त जा रहा है, बट ओवर अ पीरियड व्हेन योर एग्जाम अप्रोचेस, यू आर द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन बिकॉज यू ऑलरेडी हैव शेड योर स्वेट, यू डोंट हैव टू स्पेंड योर ब्लड नाउ इन वॉर, है ना, आपने पहले ही बहुत उसका क्या बोलते हैं हार्डवर्क किया है, नाउ इन एग्जाम हॉल यू आर द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन। लेकिन जिन्होंने वो किया नहीं है, दे आर मोस्ट एंशियस पीपल इन द एग्जाम हॉल because they are the passive learners, right? All right, then shall we stop? All right, thanks for your patient listening. Let's meet when the session regularly starts.